हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक है एक अनदर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है और दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एवरी टाइम आस्क द क्वेश्चंस। हाँ, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हर साल ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दैट टाइप्स के प्रॉब्लम्स तो आपको ध्यान में रखने होंगे। और एक या दो क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 5 to 6 मार्क्स के प्रॉब्लम्स आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं नेट के। तो गेट आल्सो कम टू दिस। सो फर्स्ट बिफोर वॉच दिस प्लीज़ लाइक्स जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स को एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी दें जैसे कैसे मैं अपने चैनल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो एक सिंपल बहुत ही प्रॉब्लम्स है, इंटीग्रल कैलकुलस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है फ्रेंड्स, दैट इज द रिलेटेड ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देखिए गिवन इज हियर, तो हियर अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में टू मेथड्स, more than be possible है, but here's I know that two methods. That's the first convolution theorem. Convolution theorem of Laplace transformations. Convolution theorem of Laplace transformations. Otherwise, you apply the DUIS, differentiation under integral sign. Then ये both methods anyone apply, then we can check out these answers. So that is here DUIS. मैं अभी इससे फर्स्ट मेथड से बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने अपलोड किए, दिसंबर 16 का भी प्रॉब्लम्स आया हुआ था, दैट इज यूजिंग द कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड uploaded it. But here next here our target is apply here DUIS and what we get find out. So DUIS is y of x is equal to x cube by 6 minus 0 to x minus s y of s ds. That is a given. Apply the convolution theorem, sorry, DUIS. So first, what is the DUIS? Here is the, suppose y of x is equal to y of alpha psi alpha phi alpha f of x alpha dx d alpha dx, sorry. So if that format हो, so so when apply the DUIS something, first we differentiate. So y dash alpha dy d alpha psi alpha phi alpha f of x alpha d alpha. So when here apply DUIS, सभी लोग जानते हैं, so what is the formula first year, otherwise मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये। So here, so we get this psi alpha phi alpha del del alpha f of x alpha plus, sorry, dx plus, next value of function with upper limit, so means f of phi alpha with alpha and derivative of upper limit with respect to parameter minus value of function with lower limit and with derivative of lower limit. So that is the formula when the apply DUIS and given the parametric form. So then we get, next what is this? So check out, this is, suppose this is 1, so differentiating 1 with respect to, here x is the parameter, this means differentiating 1 with respect to x. So देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड दिस इज y dash x is equal to, right hand side here 3x square upon 6 minus d upon dx 0 to x minus s y of s ds हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड, बट हियर सो अब देख रहे हैं हियर 3 2 मीन्स x square by 6, sorry, x square by 2 minus, here अप्लाई कर दीजिए DUI, दैट मेथड इज अप्लाई हियर. सो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ हियर समथिंग. फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस
partial derivative of this x minus s. So what is this partial derivative of this? 1. Partial derivative of that term. So we get here 0 to x y of s ds. 0 to x y of s ds. Then partial derivative with respect to x is 1, another term 0 into upper limit. So function with upper limit, so x minus 0 means all another term is 0. That is here we get. This is the y dash of x. Again differentiate with respect to, so y double dash x. Here 2x upon 2 minus d by dx 0 to x y of s ds. अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हियर अगेन अप्लाई दिस. सो चेक आउट हियर. सो y double dash x is equal to x minus, which is partial derivative, the first term 0, but into that is upper limit in plus here, upper function with upper limit means here मिलेगा आपको y of x, another term 0. It means here this is a y double dash x is equal to x minus yx here. So that is suppose is 2. It means so when differentiate 2 time then we get here. अब वन बाय वन आप ऑप्शन के थ्रू चेक करिए कौन सा आंसर फाइंड आउट होता है नहीं. सो गो टू द ऑप्शन वन बाय वन. सो ऑप्शन फर्स्ट, टेकिंग ऑप्शन फर्स्ट, y of x is equal to 1 by 6 0 to x s cube sin of x minus s ds. So differentiate this with respect to x. So how much we get? Here y dash x is equal to 1 by 6 0 to x del by del x s cube sin of x minus s ds plus. देखो फ्रेंड, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली here अप्लाई कर रहा हूँ. तो अप्लाई द फर्स्ट नेक्स्ट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन विथ अपर लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन विथ अपर लिमिट, तो साइन x में साइन 0 0 इनटू फिर नेक्स्ट. So all that this term is 0. Only here we get 1 by 6 0 to x and sq added is sin means here minus cos of x minus s dx, that is y dash x. Similarly if you apply again here, apply again double derivative. So y double dash x is equal to here this is a minus s cube by 6 0 to x and here that term derivative, so we get 1 by 6 derivative cos x minus s upon 6 s cube dx plus upper limit, so cos 0 is 1 means minus here that term, that is a cos 0 is 1 means a minus s cube x cube and 0 and something, but which is not equal to equation number 2, that is here equation 2. So equal nahi, it means second first option is wrong. Next go to the second option. Second option here, second y of x is equal to 1 by 6 0 to x s cube cos x minus s ds. तो आप अप्लाई करें एंड सिमिलरली वी चेक आउट. सो इज आल्सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. अगेन मैंने चेक किया, दैट इज हियर. सो y dash x इज इक्वल टू 1 by x 0 to x that is s cube sin of x minus s here apply du is. So sin derivative of x minus s and another, so is not equal to, because here friends क्योंकि here जो given है इसमें y of s not given, y of s, so which is not equal to. So similarly when find out the third option, second is wrong. अब go to the third.
third options, y of x is equal to 0 to x s sin x minus s ds. So that is the third option. So check out y dash x is equal to 0 to x s d by del by del x sin of x minus s ds plus function upper limit 0. Here derivative function with upper limit, so that is 0, and here also 0. So that is minus 0 to x sin cos of x minus s ds. That is y dash x. Again y dash x double dash x. So check out this minus del 0 to x del x cos of x minus s into s ds minus function with upper limit. तो function with upper limit, this is a minus of x. ठीक है, function with upper limit, तो cos of 0 1 that is x and into derivative upper limit, that is the, so that case is here minus 0. So that case minus 0 to x sin s sin x minus s ds, that is the y double dash x, and here minus of x. No, not minus x, is plus, here plus. So that is x minus, and which is the given y of x. So y of x, y double dash x. So which is equal to equation number 2. It means that case clear, this option number 2 is correct, third is correct. Similarly we check out this, the fourth is also wrong, क्योंकि is the one option correct है. तो similarly when one by one check with it, आप try करें and check करें, then we get the third option is correct, remaining fourth option है something is correct, incorrect. So thank you, bye bye.